Good morning. Let us discuss bacteria, the common member of kingdom Monera. Kingdom Monera includes all the unicellular prokaryotes. They are number 1 bacteria, number 2 blue green algae, number 3 mycoplasma. So let us discuss bacteria. In bacteria in Udia bijanu, bacteria in singular form bacterium. Bacteria the singular form bacteria. Question may arise, what are bacteria? Bacteria काकू bacteria किए? Bacteria कौन? तो आंसर है bacteria are primitive, आदिमो primitive माने ancient, primitive unicellular prokaryotic organisms. They are microscopic in nature. They possess rigid cell wall but have no true chlorophyll pigments. कथा रिपीट करूँ देखो. बैक्टेरिया गोटे प्रकार यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टेरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मीन्स दे कैंट विजिबल टू आवर नेकेड आई. ओके. बैक्टेरिया प्रिमिटिव इन नेचर. प्रिमिटिव मीन्स एंशिएंट, आदिमो. बैक्टेरिया आर यूनिसेलुलर. देयर होल बॉडी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल. बैक्टेरिया आर प्रोकार्योटिक मीन्स bacterial cell has no well organized nucleus. That means bacterial cell has no nuclear membrane and nucleolus. Rather, genetic material is represented by naked histone-free DNA. Bacteria unicellular. Bacteria prokaryotic. तामाने bacteria cell भितरे true nucleus बा well organized nucleus नहीं. माने nuclear membrane नहीं, nucleolus नहीं. Nucleus portion ले naked DNA होची. Single circular DNA होची. The DNA is its genetic material. Bacterial cell रो cell wall होची. Below the cell wall cell membrane is present. Bacterial cell रो true chlorophyll pigment नहीं. Bacterial cell रो plant cell परिका cell wall होची. Cell wall तोड़ को cell membrane होची. Cell membrane. Bacterial cell रो cell wall होची. Cell wall तोड़ को cell membrane होची. किंतु बैक्टेरियल सेल ट्रू क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं. प्लांट सेल परिका बैक्टेरियल सेल सेल वॉल अछि. फॉर सच इन 17th century bacteria were placed in kingdom Plantae, but nowadays in 5 kingdom classification R.H. Whitaker placed bacteria in a separate kingdom Monera. So regarding the introduction of bacteria, we can say bacteria are microorganisms means अणुजीव. They can't visible to our naked eyes. Bacteria are microorganisms. Bacteria are primitive, ancient. Bacteria are unicellular. The whole body of a bacteria is a cell. Bacteria are unicellular. Bacteria are prokaryotic. Means bacterial cell has no well organized nucleus. Bacteria has no well organized nucleus means bacterial cell has no nuclear membrane and nucleolus. बैक्टेरियल सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं. डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिसी क्रोमोसोम है नहीं. बैक्टेरियल सेल भीतर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज प्लास्टिड्स आर टोटली एब्सेंट. ओनली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल. राइबोसोम इन केस ऑफ बैक्टीरिया आर राइबोसोम्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया आर 70S टाइप. मीन्स बैक्टेरियल सेल राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज मशीन रे तमे सेपरेशन गले से 70 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन करबे. अच्छा बैक्टेरियल सेल रो प्लांट सेल पर का सेल वॉल अछि किंतु ट्रू क्लोरोफिल इज एब्सेंट. बैक्टेरियल सेल ट्रू क्लोरोफिल नहीं. बैक्टेरियल सेल सेल वॉल अछि प्लांट सेल पर का किंतु ट्रू क्लोरोफिल नहीं. तो आमे कोइ परिया जेउ यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सेल वॉल अछि किंतु ट्रू क्लोरोफिल नहीं. दे आर बैक्टेरिया. पुनी मन रखिदिबो जेउ प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म रो सेल वॉल अछि एवं ट्रू क्लोरोफिल अछि प्लांट लाइक दे आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी. फर्दर रिमेंबर दी बैक्टीरियलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच डू नॉट पोजेस सेल वॉल आर माइकोप्लाज्मा. जेउ प्रोकार्योट्स रो सेल वॉल नाही से माइकोप्लाज्मा. जेउ प्रोकार्योट्स रो सेल वॉल अछि किंतु ट्रू क्लोरोफिल नाही बैक्टीरिया. जेउ प्रोकार्योट्स रो सेल वॉल अछि एवं ट्रू क्लोरोफिल पिगमेंट अछि एवं प्लांट परिका ट्रूली फोटोसिंथेसिस करे. फोटोसिंथेसिस बेले ऑक्सीजन इवॉल्व करे से हला ब्लू ग्रीन एल्गी बा ब्लू ग्रीन एल्गी बा साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक आनाबोइना एटसेट्रा. Okay, so regarding the introduction of bacteria, we can say bacteria are unicellular prokaryotic
microorganisms. They possess cell wall but have no true chlorophyll pigments. Okay. Then bacteria were discovered by Antony von Leeuwenhoek in the year 1676. Antony von Leeuwenhoek was a Dutch, means native of Netherlands, citizen of Netherlands or Holland. Antony von Leeuwenhoek was a Dutch. He discovered bacteria in the year 1676. Okay. Then regarding the distribution of bacteria, you can simply say bacteria are omnipresent. Bacteria are cosmopolitan in their distribution, means they found in everywhere. Bacteria are found in everywhere, in every parts of earth where life can exist. Bacteria are found in everywhere. Somewhere achandi. Bacteria found in air, bacteria live in soil, bacteria live in water, bacteria live in ice, bacteria live in hot water. Bacteria also live in the body of living organisms, including plants and animals, as parasite. Bacteria live as parasites. Bacteria freely also live in soil, or bacteria grew on dead bodies. Bacteria are cosmopolitan in their distribution, means they found in everywhere, every parts of earth where life can exist. Okay. Then on the basis of distribution, bacteria are of two different types: archaebacteria, eubacteria. In my last class I have already told you, bacteria on the basis of their origin, on the basis of their distribution, are of two different types. The most ancient bacteria, which live in extreme hot condition, extreme salty condition, are called archaebacteria, and the bacteria which live in normal environmental condition are called eubacteria. Okay. Archaebacteria are of three different types: methanogen, halophile, thermophile. Okay. Then on the basis of staining response in medical science, bacteria are classified in two different types: gram positive bacteria, gram negative bacteria. Remind kor dekho, bacteria मान को medical science रे सेमानकर स्टेनिंग रेस्पॉन्स अनुसार, अर्थात सेमाने कलर हवा रेस्पॉन्स, कलर को रेस्पॉन्ड करबा अनुसार बैक्टेरिया आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. गोटे स्टेन बा कलर अछि ता कोंदी ग्राम, क्रिस्टियन ग्राम ता डेवलप करथिले ता कोंदी ग्राम स्टेन. गोटे स्टेन बा कलर अछि, से स्टेन को तमे बैक्टेरिया ऊपर पकाओ, बैक्टेरिया को से स्टेन द्वारा स्टेनिंग करो, देखो जो बैक्टेरिया ग्राम स्टेन को रिसीव करिकी वायलेट कलर हे जिवे, सेमानन कोंदी ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया. आ जो बैक्टेरिया ग्राम स्टेन रिसीव करंदिनी ता कोंदी ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया मेनली डिफर करन ताका सेल वॉल रे. ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया मानकर सेल वॉल रे लिपिड कंटेंट कम, पेप्टिडोग्लाइकन बेसी. ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया को सेल वॉल रे लिपिड कंटेंट बेसी, पेप्टिडोग्लाइकन कम. So it is all about introduction of bacteria. Then regarding the size of bacteria, we can simply say the size of bacteria varies from 1 micron to 5 micron. 1 micron to 5 micron, the normal size. Then regarding the shape means their form, akar. Bacteria shape अनुसार bacteria are of 4 different types. The general size of bacteria is 1 micron to 5 micron. The smallest bacteria are Dialisteron ammonocentris, whose size is lesser than 1 micron. Most commonly 0.1 to 0.5 micron. Dialisteron ammonocentris. Similarly, Begiotua, Bacillus bosseli are largest bacteria. Their size more than 5 micron, even more than 50 micron. Then shape of bacteria. On the basis of shape, bacteria are classified into 4 different types: Coccus, Bacillus, Vibrio, and Spirillum. On the basis of shape, bacteria are of 4 different types. The bacteria which are rounded in shape are called coccus. The rod-like bacteria are called bacillus. Bacillus are commonest form of bacteria. Actually, the literal meaning of bacteria is small stick. Bacteria means small stick.
as these are small stick like in nature, maximum majority of bacteria are bacillus form, means stick like, hence they use the name bacteria. Bacteria means small stick like organism, छोटो काठी भलिया जीव. ये बैक्टेरिया टर्म ना इंट्रोड्यूस करथिले एरेनबर्ग. बैक्टेरिया विदुर कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टेरिया है ना, rod like or stick like bacteria, they are called bacillus. And the comma like bacteria, the bacteria whose shape is comma like are called vibrio, and the bacteria whose shape is spiral are called spirillum. On the basis of shape, bacteria are of 4 different types. Further देखो कोकोस फॉर्म बैक्टेरिया जदि एमजी आइसोलेट हेक रहउथबो सिंगली, कोकोस बैक्टेरिया जदि एकुटिया रहउथबे, they are called micrococcus. When they live in pair are called diplococcus. When they live in tetrad form, चारटा सांग होइकी रहिबे, tetracoccus. If coccus bacteria live in chain, streptococcus. If they live in irregular masses, staphylococcus. It's called staphylococcus. जो coccus form bacteria टा सिंगल रहउथबो, micrococcus. যদি দুইটা সাঙ্গ হই রহুথিবে ডিপ্লোকোকস, যদি 4 নম্বর সাঙ্গ হই রহুথিবে টেট্রাকোকস, ইন চেন রহুথিবে স্ট্রেপ্টোকোকস মাস হই রহুথিবে স্টাফাইলোকোকস. তো ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি শেপ অফ ব্যাকটেরিয়া. দেন regarding the structure of bacteria, we can simply say bacteria are unicellular prokaryotic in nature. Their whole body is a cell. Then bacterial cell is covered by a rigid covering called cell wall, below which cell membrane is present. In case of gram-positive bacteria, cell membrane infolds to form mesozoom. Then bacterial cell is devoid of membrane-bound organelles. Bacterial cell ভিতরে membrane-bound organelle nahi. Only ribosomes are present. These ribosomes are 70S type. These ribosomes are 70S type. Then bacterial cell ro nucleus is incipient type, primitive type. Nucleus ro nuclear membrane is absent. Nuclear loss is absent. Nucleus portion केवल naked DNA होची. The DNA is double stranded circular DNA. This DNA is the genetic material of bacteria. It is otherwise known as nucleosome. Then bacterial cell ro flagellum is present. Flagellum shows 1+0 fibrillary arrangement. That means bacterial cell जो flagellum गुटिए fibril बा thread theory. The bacteria which have no flagella are called atricous bacteria, which is one flagellum, monotricous bacteria. The bacteria which possess 2 flagella in both their ends, both the ends are called amphitricous bacteria. The bacteria which possess flagella throughout their surface are called peritricous bacteria. Flagella distribution अनुसार bacteria different type रो. जो bacteria flagella नहीं, atricous bacteria. Trichome माने hair. जो bacteria में गुटे flagellum अछि, monotricous bacteria. जार दीटा flagella अछि, amphitricous bacteria. जार flagella throughout the surface अछि, peritricous bacteria. जो bacteria गुटे end रे top flagella अछि, गुच्छे flagella अछि, ता कोंदी cephalotricous bacteria and so on. So it is all about the structure of bacteria. Then regarding locomotion, we can simply say bacteria do not perform locomotion. Okay. Then regarding nutrition, we can simply say some bacteria are autotrophic in nature, perform either photosynthetic autotrophic nutrition or chemosynthetic autotrophic nutrition, and some bacteria are heterotrophs. Heterotrophic bacteria are either saprophytes or parasites. Review करके देखो कि bacteria का mode of nutrition किसी को autotrophic means they can prepare their own food either by utilizing the energy of sun or utilizing the energy from other chemical substances. And other bacteria are heterotrophic. Some bacteria are autotrophic, some are heterotrophic. Autotrophic bacteria are of 2 different types: photosynthetic autotrophic bacteria and chemosynthetic autotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are of 2 different types: parasitic bacteria, saprophytic bacteria. Then regarding reproduction of bacteria, we can simply say bacteria reproduce vegetatively either by binary fission method. Binary fission, bacterial cell directly simple cell division method रे divide होगी, दीटा bacteria आ जाए, or by budding method. Budding means bacterial cell small output बारे से separation है कि नुआ bacteria हुए. Bacteria reproduction करे vegetatively either by binary fission method or by budding method.
and sometimes bacteria also reproduce asexually by producing endospore. Sexual reproduction is totally absent in bacteria. Instead of sexual reproduction, there is genetic recombination takes place in bacteria. Bacteria sexual reproduction हुए नहीं. Sexual reproduction substitute रे bacteria genetic recombination हुए. Means गुटे bacteria gene बा DNA आउ गुटे bacteria बड़ी को जाए. मन की दियो यदि bacteria DNA टा दीटा bacteria contact होगा जो यदि जोनों करो DNA आउ जोनों को बड़ी को जाए. यदि गुटे bacteria DNA आउ गुटे bacteria बड़ी को जाऊ थो दीटा bacterial cell contact होगा जो that is called conjugation. यदि गुटे नेकेर DNA bacteria बड़ी को entry करे that is called transformation. यदि भाइरस द्वारा गुटे बैक्टीरिया DNA आउ गुटे बैक्टीरिया बड़ी को जाए तब कौन दी ट्रांसडक्शन. So it is all about bacteria. Then remember bacteria like prokaryotes which have no cell wall. जो bacteria like prokaryotes नो cell wall नहीं तब कौन दी mycoplasma. Another example of kingdom Monera, mycoplasma or pneumonia like organism, PPLO. Bacteria like organism which have no cell wall. Bacteria without cell wall are called mycoplasma. Mycoplasma is otherwise known as moneran without cell wall. Moneran without cell wall. Mycoplasma. Mycoplasma बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म रो सेल वाल नाही तमन जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म रो जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म टा प्रोकारियोटिक हेतिबो सेल रो सेल मेम्ब्रेन थिबो सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि सेल वाल नथिबो जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म रो सेल वाल नाही तो माइकोप्लाज्मा कोनथि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड hence mycoplasma is otherwise known as joker of living world. Mycoplasma को अन्य नाम रे कौन दी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट causes pleuropneumonia disease or long infection in cattle माने करे ये long infection disease करे तो mycoplasma बैक्टीरिया परिका प्रोकारियोटिक किंतु सेल वॉल नहीं mycoplasma भाइरस परिका obligate parasite mycoplasma भाइरस परिका parasite total parasite और बैक्टीरिया परिका प्रोकारियोटिक as mycoplasma shows character of bacteria on one hand and character of virus in other hand. So it is known as connecting link between bacteria and virus mycoplasma. Mycoplasma टा parasite भाବରେ अन्य organism बॉडी रे it is pathogenic in nature. Pathogenic means disease causing in nature, infectious in nature. It can cause disease. Mycoplasma disease करे ए जे brinjal plant बा egg plant रो little leaf disease बाइगण गथर जो लिटिल लीफ डिजीज हुए लिटिल लीफ डिजीज छोट पत्र रोग ए माइकोप्लाज्मा करे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म तार सेल वॉल नहीं माइकोप्लाज्मा कैरेक्टर बैक्टीरिया कैरेक्टर पूरा समान केवल बैक्टीरिया रो सेल वॉल अछि माइकोप्लाज्मा रो सेल वॉल नहीं देन माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन करे बाइनरी फिशन मेथड रे एसेक्सुअली ओके देन लेट अस डिस्कस ब्लू ग्रीन एल्गी blue green algae or cyanobacteria. Listen me, bacteria like prokaryotic organisms. Bacteria like prokaryotic organisms which possess true chlorophyll pigments. Bacteria like prokaryotic organisms which possess true chlorophyll or green pigments are called blue-green algae. Okay, bacteria like prokaryotes. Likhniyo, bacteria like prokaryotes which possess true chlorophyll pigments. Bacteria like prokaryotes which possess true chlorophyll pigments.
मन रखिथिबो जो बैक्टीरिया लाइक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म रो ट्रू क्लोरोफिल पिगमेंट अछि जस्ट लाइक प्लांट्स जो बैक्टीरिया लाइक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट परिका ट्रूली फोटोसिंथेसिस करे फोटोसिंथेसिस बेले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करे एवं ऑक्सीजन को इवॉल्व करे ऑक्सीजन को रिलीज करे जो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करे ट्रूली प्लांट परिका जार ट्रू क्लोरोफिल पिगमेंट अछि ताकू कहंदी ब्लू ग्रीन एल्गी बा साइनोबैक्टीरिया तुम कोइ बार कोन पई एमांगर तो क्लोरोफिल अछि तनु ग्रीन को आगला ब्लू कोन पई को आगला दीज आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज़ दे possess green pigments chlorophyll and also blue pigment phycocyanin जेहेतु एई प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म मानकर ट्रू क्लोरोफिल ए पिगमेंट अछि क्लोरोफिल पिगमेंट हरित कणिका एवं ब्लू पिगमेंट पिगमेंट मींस कलर्ड कंपाउंड व्हिच कैन अब्जॉर्ब लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स जेहेतु एमानकर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अछि प्लस ब्लू पिगमेंट फाइकोसियानिन अछि तो एमानन को ब्लू ग्रीन एल्गी बा बैक्टीरिया हैविंग cyanin blue pigment called cyanobacteria okay so bacteria like organism which perform truly photosynthesis which possess true chlorophyll pigments are called blue green algae are otherwise known as oxygen evolving prokaryotes because they are prokaryotic in nature but they perform truly photosynthesis just like plants and can evolve oxygen or release oxygen to environment plant परिका एमाने क्लोरोफिल बिहेव करती ट्रूली फोटोसिंथेसिस करती और फोटोसिंथेसिस बेले माने ऑक्सीजन रिलीज करती एनवायरनमेंट को तेणु एमान को कहती ब्लू ग्रीन एल्गी को कहती ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोकारियोट्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोकारियोट्स ब्लू ग्रीन एल्गी लिव इन वाटर और इन wet environment moist environment they live in water or in moist soils or also live as symbionts in higher plants blue green algae freely soil le रहंती freely water le रहंती moist land बा उद्दा माटी रहंती किछि भी symbiont भाबरे सहजीवी भाबरे अन्य higher plant body रे रहंती blue green algae भितर किछि अछंती unicellular blue green algae example spirulina आ किछि blue green algae अछंती they are filamentous means composed of a row of cells or colonial means composed of a mass of cells some blue green algae are unicellular some are filamentous or colonial and their body surrounded by mucilaginous sheath blue green algae मानकर cell चारिपटे mucilage is derived carbohydrate mucilage is one type of slimy material लाड़ुआ पदार्थ एमानकर बॉडीटा म्यूसिलेज नामक लिक्विड स्लाइमी मटेरियल द्वारा कवर हो जाए ब्लू ग्रीन एल्गी autotrophic in nature because they possess true chlorophyll pigments they perform truly photosynthesis they reproduce only by vegetative method or asexual method they are sexually producing totally absent like all other prokaryotes blue green algae some blue green algae have one type of thick walled cells some filamentous blue green algae have one type of thick walled cells such cells are known as heterocyst which helps in nitrogen fixation जब क्षारजन विबंधन किसी ब्लू ग्रीन एल्गी मानकर थिक वॉल्ड सेल अछि such cell is called heterocyst helps in nitrogen fixation heterocyst द्वारा ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल रे नाइट्रोजन को अमोनिया रे कन्वर्ट करी फिक्स कर दे नाइट्रोजन फिक्स करे त माने सॉइल रो फर्टिलिटी बा उर्वरता बढ़े दिए ब्लू ग्रीन एल्गी रो कॉमन एग्जांपल हैला नॉस्टॉक कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी आर nostoc spirulina anna boina etc तो bacteria mycoplasma and blue green algae are three members of kingdom monera that's all तुम आउ थरे नोटिस करछु देखो ए वीक परे अक्टोबर लास्ट वीक जो 20 पाखरु अक्टोबर 19-20 पाखरु तुमर 10 दिन टोटाली क्लास बंद रहिबो पूजा वैकेशन छुट्टी नवेम्बर फर्स्ट वीक रे तुमर गवर्नमेंट प्री प्लान अनुसार सो हॉस्टल खुली जीवो क्लास भी जो कॉलेज स्कूल कॉलेज खुलिबो तो तुम नवेम्बर फर्स्ट आसी कि डायरेक्टली फिजिकली आम क्लास रूम रे प्रेजेंट रहबो हम अपेक्षा करजो क्लास करिवो से जाय आम क्लास ए वीक पर कमिंग वीक क्लास तुम 10 दिन टोटाली बंद रहिबो पूजा वैकेशन
ओके पूजार समस्त मस्ती करिवो खुशी करिवो दैट्स ऑल पुणी नेक्स्ट क्लास तुम मुलाकात थैंक यू